जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे अमृता एवं आपण देखुं आमर चैनल अमृता ट्यूटोरियल सबुठार खास और सबुठार मिठास हूँ चैनल। तो बहुत गुड़े पिला मानकर थिला इंग्लिश पेडागोजी को नहीं बहुत सारा क्वेश्चंस पेडागोजी रे जदि आपण ओटीटी जेटी रैंक रो एग्जाम दौरान ताले आपन को पेडागोजी रिलेटेड निहाती सब्जेक्ट दरकार एवं बहुत गुड़े पिला कंटेंट नॉलेज थिबो किंतु सेमानक पाखरे अवेलेबल न थाई पारे पेडागोजी पार्टर जेतिकी नॉलेज जेतिकी कंटेंट रहिबा दरकार गोटे ओटीटी पास आउट करिया पय ओएसटीटी पास आउट करिया पय सीटीटी पास आउट करिया पय बा आपण माने जेटी पास आउट करिबा पय 2022 होचे आपण मानक पय एक सुवर्ण सुजग जहाँ को हाथ छड़ा कले आपण हुए ता आगामी 5 वर्ष पय कोनोसी चाकरी मध्य करि पारे कहीं डे बाय डे प्रोसेस रे मॉडर्नाइज होची एजुकेशन सिस्टम। तो आज वीडियो आपण मानक पय लर्निंग इंग्लिश at upper primary level. So first of all importance of learning English and objective of English language also, then in which method we can use to better performance in English and also to manage our classroom management. So first of all, what is English? You know, English is the most important international language. So English, okay, English is known as what? English is the, you can call that English is an international language first of all. Okay, English as an international language. Okay, English is an international language. Number 2, you can say that English is the mother tongue of more millions people in the whole world. So first of all, mother tongue. Mother tongue means matrabhasha. So English is the mother tongue of millions people also. Okay, English as a subject of study in the curriculum or the school level cannot be understood. Its considerations of its multiple utilize is a link language of the world and fact as a window on the world. Inventions, discoveries and development in different areas in the world of communicated through its language. So English also you can call link language. So where the link language? Because it can be linked with your international society, international business, international peoples also, and it is called a library language also. English is a library language you can call. Okay, so what is the link language? English is a link language of a whole world for international links on matters like trade, educations, administrations also, management also, social, educational and cultural affairs also. Every country rely on English. Okay, so then in English, you know, as an international language, English is the first language in countries like United States of America, Australia, Canada also. It is the second language of many countries like Russia, India and Germany also, France also. Then United Nations organizations has given English is the status of being an official language. So United Nations of America also call that English is an official language. Okay, English is an official language.
मैंने आपण कहि परिबे द इंग्राजी हो आभाषिक बा आपणकर ऑफिस जो कार्य करा जाए ताको ऑफिस लैंग्वेज कहि पारे ऑफिस सहित आम कथबार्ता हो पारिबा आपणकर एमडी साहब थाई पारंती आपणकर मैनेजर पोस्ट थाई पारंती आपणकर मालिक मध्य आसी पारंती तेणु आपण कौन करेंगे सेटा को कंटिन्यू करेंगे देन you can call that inventions discoveries and developments also in the world are communicated through English सारा विश्व जब हम किसी कम्युनिकेशन करि परिबा तले इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं कि हमको बहुत सारा कम्युनिकेशन and then English is a library language also so you can call knowledge and wisdom is stored by English so it is an important to learn this language English plays a vital role in higher education as an important library language also and world's renowned universities uses is medium of education बहुत गुड़े संस्था अच्छे बहुत गुड़े ऑफिस मध्य अच्छे बहुत गुड़े यूनिवर्सिटी मध्य अच्छी जो थे आप केवल इंग्लिश नॉलेज को कौन करते नामर पूरा कौन करते बाध्यता आप नापाई आप अदर किसी सब्जेक्ट नहीं पारे ना पाठ पढ़ी पारे ना कहीं आफ्टर स्टडी आपड़ जब कौन प्रकार जॉब करने चाहते आप कौन प्रकार स्टेबल होगापी चाहते इट इज बेटर ऑप्शंस बेटर यूनिट बेटर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो आप कंटेंटफुल नॉलेज अच्छी पुणी इंग्लीश आप पाइबार कौन प्रकार प्रतिफलन कौन प्रकार बाधा विघ्न आपण को आसबनी नेक्स्ट इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो of United States of America. So it is a powerful language to press and media and news channel all over the world. So English language is this precious time and you can go, when you learn something then you can deserve then you can also talk about how you prepare with it. If you not prepare then why you call it. So English acts a window also to the world through the which we can see scientific, technological, literacy, political, social developments occurring around the world. Okay. So next we discuss about your objective of teaching learning English. First of all, so many causes are so many main point also you can call it the objectives of teaching and English grammar. So first of all the pupils listen and understand what is taught in the class. Main objective of teaching learning English are given below. First of all the pupils understands the significance stress pause and pronunciations. जिते बड़े गोटे पिला वाक्य कौन तार प्रोनाउंसिएशन प्रथम क्लीयर हवा दरकार प्रोनाउंसिएशन भूल अच्छी देन तार कौन पाठ मध्य संभवपर नुहे करने आफ्टर प्रोनाउंसिएशन आफ्टर प्रोनाउंसिएशन he or she can speak something. Okay, next the people speak with proper stress pause informations and current pronunciation also. Now the pupils write good handwriting and with correcting pronunciation also. So you can know all the details about a child's what he likes and what is the knowledge about and writing also understanding also all the teaching process and how a English language can be help to a child in to find out the inner quality also and also जमती आम कहीपर जे आपण जिते बड़ हे से आपण मानकर इंग्लिश नॉलेज को पाथ्य करी आपण आपणकर भविष्य को उज्जवल करें. इंग्लिश लैंग्वेज एमती एक लैंग्वेज केवल आपणकर नुहे आपण भितर लुचिकी अंतर्निहित गुण को से कौन कर परिप्रकाश कर एवं जहाँ द्वारा आप छोट छोट बिजनेस हो जो आपणकर व्यवसाय हो आपणकर कहिबार शैली हो टॉकिंग पावर हो कहीं छोट बेलू आम डिसाइड करें कहीपर जे कौ पिलार भविष्य लक्ष्य कौन हो पार
किंतु जदि इंग्राजी माध्यम स्कूल पढ़ुची इंग्राजी शिखा को पिला माने चाहूँगी इंग्राजी कौन कौन कर आम डे टू डे लाइफ रे वी कैन यूज मेनी मोर वर्ड्स ऑल्सो टू स्पीक इन इंग्लिश आमर खंडी खंडी पच हो इंग्लिश वर्ड आम छोट बड़ सिंपल हो हार्ड हो सबु बेले कही आसीचे कहूचे मत कि आम जाने जे तार नॉलेज कौन तार ऑब्जेक्टिव कौन तार अंडरस्टैंडिंग कौन हाउ वी कैन यूज ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये थिला पूरा वीडियो बेसिक वीडियो काहे कि इंग्लिश इज ए प्रेस्टिजियस लैंग्वेज एंड इंग्लिश is a link language. English is an international language. English you can call a total variation language. So आपण मानकु आपण मानक पिला तथा आपण मानकर जो माने विद्याध्ययन करछन्ती से मानको टिके बेसिकली आपण इंग्लिश शिखिया पय प्रयास करंतु एवं ता सहित आम परवर्ती वीडियो देखिबा जे टीचर माने यूज करूथिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड that we can use also in our classroom management and in teaching learning process then नुआ करी लॉन्च करिया पय जाउची अमृता ट्यूटोरियल आपण माके स्पोकन इंग्लिश क्लासेस so don't forget to watch share and subscribe my YouTube channel also then spread it because ओडिसा रे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो पय जाउची स्पोकन इंग्लिश क्लासेस with free आपण को एक पैसा बा टंकाटे खर्च करा पड़ो ना फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन लर्न इंग्लिश एंड यू कैन डेवलप योर इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो सो थैंक यू हैव ए नाइस डे भल रुहतु खुश रुहतु दुनिया को करके देखाओ एमती दुनिया करने चाहिए आपण को बड़े जमते थैंक यू हैव ए नाइस डे।